Now, in continuation with the previous topic that we were discussing about functions, so today we will be discussing about default arguments in functions. Okay, last class में हमने discuss किया था in functions. Now today we'll discuss default arguments that can be given to a function. Now, a function in C++ can be called without specifying all its arguments. In this case, the function declaration must specify or provide default values for those arguments that are not specified. Means कि normally जब भी आप कोई function जिसमें arguments required होते हैं, you have to pass the values of those arguments. Like suppose अगर हमारा एक function add है, to add two numbers, then obviously while calling the function you have to pass two values to it. अगर ये function is written for adding two numbers, तो आपको वो दो numbers pass करने पड़ेंगे जिन पर ये function operate करेगा. So it will add these two numbers 2 and 5. These are your formal parameter. These are your actual parameters. ठीक है. और suppose हमने ऐसे लिखा c is equal to add 2, 5. तो add function 2 और 5 को add करके उसका result c में डाल देगा. Now, by the use of default arguments, हम ऐसा कर पाएंगे कि अगर suppose मैं लिखती हूँ c is equal to add and I am not passing any arguments to the function, then function define करते समय जो भी हमने default parameters दिए होंगे हमारे arguments को, default values दिए होंगे हमारे arguments को, our function will run on those default values. So even if we are not passing any parameters to this function add, the add function will assume the default values of the parameters and the function will run on those default values, do the required work and return the result in the return variable, that is C. Okay. Now we will see how we can provide default values to arguments. Now, the first example is, suppose there's an add function which is returning float type value and it is taking three parameters A, B and C. So basically हमने एक add function बनाया है for adding three numbers A, B and C. Now यहाँ पे क्या किया है हमने, int A, int B is equal to 2 and int C is equal to 5. So what we are doing here is कि हम B और C को default values assign कर रहे हैं 2 and 5. So in this case, even if we don't pass the value of B and C, the function will assume the value of B as 2 and C as 5. Means कि अगर हम जब भी इस function को call करेंगे और अगर A की value सिर्फ pass करेंगे, A की value pass करेंगे, so that value will go in the say variable A, and B and C will assume their default values, that is B will be assumed as 2 and C will be assumed as 5. Now default values तभी use होती हैं जब हम उनकी values pass नहीं करते हैं function पे. If we pass the values of all the parameters, then in that case जो हमारे default values हैं, they are overridden. So suppose अगर हम ये लिख करके function को call करते हैं, like say add 2, 7, 10, then in that case A will get 2 value, B will get 7 value and C will get 10 value. ठीक है. So in मतलब इसका ये है कि default values come into picture या they are used only when their values are not passed as actual parameters to the function. तो जब हम उन variables की value नहीं pass करते हैं जिनको default values provided है function के अंदर, then the function assumes the default value while calculations. Now अगर next time हम function को call करते हैं say by saying add 2,
7 ना। अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट पासिंग टू वैल्यूज 2 and 7। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि ए में वैल्यू 2 आएगी, बी में वैल्यू 7 आएगी, बट सी की वैल्यू हमने पास नहीं की है, तो उसमें वैल्यू 5 अज्यूम हो जाएगी। दिस डिफॉल्ट वैल्यू विल बी अज्यूम्ड एज 5। सो इस केस में ए विल टेक अ वैल्यू 2, बी विल टेक अ वैल्यू ऑफ 7 एंड सी जिसकी वैल्यू पास नहीं की है तो इट विल अज्यूम द डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं बाय जस्ट पासिंग से वन पैरामीटर, से ऐड 10। नाउ अगर हमने इस फंक्शन को कॉल किया विद जस्ट वन पैरामीटर, then in that case that value will move to a because a की कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट नहीं है, एंड सिंस b एंड c की वैल्यू हम फंक्शन कॉल करते समय पास नहीं कर रहे हैं, they will assume their default values as 2 and 5। so इस केस में a की वैल्यू 10 हो जाएगी, b की 2 हो जाएगी एंड c की 5 हो जाएगी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या दिखाया है, this is illegal, this particular example is illegal because trailing arguments cannot be is not default। now ये केस possible है, but this is not possible, the reason being this is not possible, this is not दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज यहाँ पे हमने a की वैल्यू डिफॉल्ट सेट कर दी है 6 एंड b की वैल्यू नहीं डिफाइन की है। आई हैव नॉट स्पेसिफाइड अ डिफॉल्ट वैल्यू फॉर b। नाउ अगर हमें इसे ऐसा कॉल करना हो, देन हाउ कैन वी कॉल द फंक्शन? वी कांट से ऐड से कॉमा 3। इस तरह से तो हम फंक्शन कॉल नहीं कर सकते हैं कि हम चाह रहे हैं कि a की वैल्यू हम पास ना करें, जो भी डिफॉल्ट वैल्यू है दैट शुड बी अज्यूम्ड, एंड b की वैल्यू हम पास कर दें 3। नाउ दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज जब तक हमने कोई वैल्यू 3 के पहले नहीं दी है, सो वी कांट पुट अ कॉमा हियर, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर हमें ये पॉसिबल कब होता, अगर हम इनको दोनों को ही इसकी जगह में हम लिखते इंट b इज इक्वल टू 3, मीन्स हम दोनों ही पैरामीटर्स को डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर दें, या जब भी हम किसी वेरिएबल को डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तो उसके आगे वाले जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको भी डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करना जरूरी है। ठीक है। नाउ this is also not possible, this is also not possible because यहाँ पे हम a की वैल्यू नहीं पास कर रहे हैं, b की वैल्यू डिफॉल्ट सेट कर दी है 5 एंड c की वैल्यू भी नहीं पास की है। सो अगेन एक मिडिल वेरिएबल, आई कांट कॉल द फंक्शन लाइक आई कांट कॉल इट लाइक ऐड से कॉमा say 5 comma and say comma and then 3। we can't write this कि बीच में हमने b को skip करना है तो 2 कॉमा लगा दिए, this is also not possible। okay, so that means अच्छा लास्ट एग्जांपल में अगर हम देखें, हमने तीनों वेरिएबल्स को डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर दी है। ठीक है। तो इस फंक्शन में अगर हम सिंपली बिना कोई पैरामीटर कॉल करे ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे, then the function will be called easily and it will assume a as 5, b as 6 and c as 7। तो डिफॉल्ट पैरामीटर डिफॉल्ट वैल्यूज का क्या पर्पस होता है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ वैल्यूज बहुत कॉमन होती हैं या बहुत फ्रिक्वेंटली यूज्ड होती हैं, तो in that case those values can be set as the default parameters, the default values। तो at times when we want to run the function on the default values, then in that case we need not pass any argument या value to the function। so automatically जो default values हैं function के अंदर defined,
they will be assumed and the function will be executed on those values and give the result accordingly. So this is the purpose of default arguments. Now, you can see this example. This example is write a function which calculates a where a is equal to so and so. ये calculate करने का program है. You have to calculate this is compound interest का program है. A is equal to principal into 1 plus r upon 100 to the power of n, where p is the principal amount, r is the rate of interest, and n is the time. ठीक है? And a is the amount, where amount is equal to p plus compound interest. मतलब principal plus compound interest gives the amount. Okay. अब यहाँ पे इस प्रोग्राम को सॉल्व किया है बाय यूजिंग अ फंक्शन. एक फंक्शन लिखा गया है जिसमें p, n and r. नाउ सी इस फॉर्मूले में कितने वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं. एक तो p, एक रेट r एंड एक पीरियड जो टाइम है n. सो एक फंक्शन बनाया जो ये तीन पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर रहा है, p, n and r, एंड दिस इज हाउ द कैलकुलेशन इज टेकिंग प्लेस. यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला लगा दिया एंड ये फंक्शन हमारा यहाँ पे कॉल हो रहा है. इट इज कॉल्ड हियर. ठीक है. एंड देन यहाँ पे आप प्रिंसिपल एंड एन को इनपुट करा रहे हो यूजर से, एंड देन द अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड एंड प्रिंटेड. ठीक है. सो जस्ट ट्राई आउट दिस एग्जांपल. और इसमें यहाँ पे फ्लोट इज इक्वल टू 50 मीन्स इस केस में इन्होंने क्या किया है, जो रेट है, रेट को इनने फ्लोट आर को 50 अज्यूम कर लिया है. ठीक है. हालांकि 50 इज अ वेरी बिग वैल्यू, सो दैट विल बी ओनली टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हेन द वैल्यू ऑफ आर इज नॉट पास टू अ फंक्शन. यहाँ पे देखो फंक्शन को दो बार कॉल किया है. एक बार p एंड n की वैल्यू पास की गई है और एक बार p, n एंड r तीनों की वैल्यू पास की गई है. ठीक है. So you can run this program and see this makes use of default value for the parameter. यहाँ आप function को call कर रहे हो, you are just passing the value of p and n, that is the principal and the time. Rate is assumed as 50 in this call because you are not passing the value of the rate. सेकेंड केस में जब आप फिर से फंक्शन को कॉल कर रहे हो, यू आर पासिंग ऑल द थ्री वैल्यूज, प्रिंसिपल, टाइम एंड रेट, एंड दोबारा से अमाउंट कैलकुलेट होगा एंड इट विल बी प्रिंटेड. सो यू आर गेटिंग टू रिजल्ट्स. वन इज दिस एंड वन इज दिस. पहले केस में p की वैल्यू 100 है, n की वैल्यू 2 है, एंड रेट जो कि हमने नहीं मेंशन किया है, इट इज अज्यूम्ड एज 50. And the amount works out to be this. Second example में the p value is 200, the time is 1 year, and the rate is 25, and the amount works out to be 250. Now, next is recursion. Recursion हम C में भी पढ़ चुके हैं. देन सी डेटा स्ट्रक्चर में भी रिकर्शन दोबारा से हमने पढ़ा था. नाउ व्हाट इज रिकर्शन इस कॉल. क्या होता है कि हम एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन से कॉल करते हैं. नॉर्मल केस में सपोज मेन के अंदर से हम ऐड फंक्शन कॉल कर रहे हैं, या ऐड फंक्शन में से हमसे प्रिंट एफ फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, या स्कैन एफ को कॉल कर रहे हैं,
मीन्स एक फंक्शन में से किसी दूसरे फंक्शन को हम कॉल करते हैं यूजुअली, ठीक है। बट व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, मतलब एक फंक्शन से ए है जो अपने आप को कॉल कर रहा है उसके विद इन से, उसके अंदर से, then that type of that concept is known as recursion. A function calls itself is called recursion. जैसे आप यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखोगे तो यहाँ मेन के अंदर से एफ फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। दिस इज अ नॉर्मल फंक्शन कॉल, दिस इज नॉट रिकर्शन, बिकॉज मेन के अंदर से हम एफ के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। दिस इज अ नॉर्मल कॉल, ठीक है, दिस इज अ नॉर्मल फंक्शन कॉल। बट यहाँ पे हमने फंक्शन के अंदर एफ फंक्शन के अंदर से दोबारा एफ फंक्शन को कॉल किया है, दिस इज रिकर्शन itself. That concept is known as recursion. Now recursion can be used, data structure में recursion काफी use होता है and it is used to solve a variety of problems. But recursion एक ऐसा concept है जो हर जगह apply नहीं कर सकते हो आप। Some problems are अपने नेचर की वजह से वो इस तरह से होती हैं कि they can use recursion for solving those problems, ठीक है। Now one of the best example for recursion is factorial. Now factorial is a good candidate for recursion, using recursion, because कभी भी जो factorial होता है, say factorial of n, factorial of n को आप कैसे लिख सकते हो? You can write it as n into factorial of n minus 1, ठीक है। अब n माइनस 1 का फैक्टोरियल को आप कैसे लिख सकते हो? यू कैन राइट इट लाइक n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 2 एंड सो ऑन, एंड दिस गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, और लास्ट में जाकर के 1 आ जाएगा, ठीक है। नाउ वी विल टेक एन एग्जांपल। सपोज हम छोटा सा केस ले लेते हैं 3 का फैक्टोरियल। 3 के फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 3 into factorial of 2, and 2 के फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 2 into factorial of 1, and 1 का फैक्टोरियल is 1, ठीक है। and when you go like this, 1 into 2 into 3, and that will be 1 into 2 into 3 is equal to 6. So that means factorial of 3 is equal to 6, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए मेरे को फैक्टोरियल ऑफ 4 निकालना होता तो हम कैसे लिखते? फैक्टोरियल ऑफ 4 is equal to 4 into factorial of 3. Factorial of 3 is 3 into factorial of 2. 2 is 2 into factorial of 1, and 1 is 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। इनको मल्टीप्लाई करोगे आप, so it is 1 into 2 into 3 into 4 is equal to 24. 4 का फैक्टोरियल is equal to 24, ठीक है। so we can मतलब रिकर्शन के लिए हम कौन से प्रोग्राम्स या कौन से फंक्शंस को यूज कर सकते हैं? नॉट ऑल फंक्शंस कैन बी रिटन यूजिंग रिकर्शन, बट कुछ ऐसे फंक्शंस जो कि इस तरह से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, लाइक सपोज यू कैन राइट इट इन दिस फॉर्म, फैक्टोरियल n कैन बी रिटन एज n into factorial of n minus 1. जो भी आपका एक्सप्रेशन इस तरह से लिखा जा सकता है, it can be used for it can be written using recursion, ठीक है। now another example for recursion is calculating the power of a number, ठीक है।
जैसे कि सपोज हमें निकालना है 2 to the power of say 5. Now 2 to the power of 5 निकालना है, it can be written as 2 into 2 to the power of 4. 2 to the power of 4 can be written as 2 into 2 to the power of 3. This can be written as 2 into 2 to the power of 2. This can be written as 2 into 2 to the power of 1. This can be written as 2 into 2 to the power of 0. And 2 to the power of 0 या anything to the power of 0 is 1. Now, आप इन सबको multiply कर दोगे and you'll get 1 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. And this will give you 32. So 2 to the power of 5 is equal to 32. Now again, this problem can be solved using recursion. इसका जनरल जो फॉर्मूला है वो हम इस तरह से लिख सकते हैं, say 2 to the power of n is equal to 2 into 2 to the power of n minus 1. या a to the power of n is equal to a into a to the power of n minus 1. Now, whenever an equation, whenever any problem can be written in this form, in the term of its previous term, whenever a term can be written as in terms of the previous term, then such type of problems can be solved using recursion. अब यहाँ पे देखें, अगर हम 2 to the power of say 2 to the power of 5 को हम क्या लिख सकते थे, 2 into 2 to the power of 4. एक 2 को हमने बाहर निकाल लिया तो लिख दिया 2 into 2 to the power of 4. So this type of questions can be solved using recursion. Now another example for that is Fibonacci series also. Fibonacci series को भी हम recursion के through लिख सकते हैं, ठीक है. Now here is a program, write a program which calculates the factorial of a number using recursion. ठीक है. अब हम प्रोग्राम एक सिंपल लूप यूज करके लिख सकते हैं, and the other way is by using recursion. Now I've already given you in the assignment, and you have already written it in C also and in data structure also, how to write a program for finding the factorial of a number. Now we will write the program using recursion. Now यहाँ पे तो सबसे पहले हमने एक नंबर इनपुट कराया जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना है, and fact is the name of your function. n is the number जिसका आपको फैक्टोरियल निकालना है, और जो फैक्टोरियल कैलकुलेट होकर के आएगा that will come in the variable f. ठीक है. and then लास्ट में आप f की वैल्यू को प्रिंट करा दे रहे हो. Now this is all same. Now let us see the function part. Let us see how to write the function using recursion. अब यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मल पैरामीटर. जो भी हम एक्चुअल पैरामीटर भेजेंगे हमारे फंक्शन से, that will be received in this formal parameter. Now I told you earlier also कि formal parameter का नाम और actual parameter का नाम same हो सकता है, but usually we keep them different so as to avoid confusion. Now ये n जो है, this is actual parameter, और ये किस फंक्शन के अंदर डिफाइंड है, मेन फंक्शन के अंदर. ठीक है. Now this is the formal parameter and it is defined within the function fact. So there is no issues. यहाँ पे एक दो अलग अलग फंक्शंस में n नाम के वेरिएबल्स हैं. मेन फंक्शन में n is holding that number जिसका आपको फैक्टोरियल निकालना है, and that is passed as an actual parameter to the function fact. And fact function के अंदर int n is again defined as a formal parameter which will receive the number whose factorial is to be calculated. ठीक. अब recursion में हमेशा आपको एक terminating condition देना जरूरी है.
जैसे कि हमने कहा 2 to the power of 0 is equal to 1 मीन्स तो आप कह रहे हो 2 to the power of n is equal to 2 into 2 to the power of n minus 1. Now there should be a point where this should stop. So we'll stop where n where we reach the power of 0 or anything to the power of 0 is 1. ठीक है, तो ये तो पावर के केस में हो गया कि जब भी n की वैल्यू 1 हो जाएगी then we will stop. Now similarly factorial में 1 का factorial is 1. ठीक है, so we will stop, we'll not go beyond 1. So we'll stop when we get the value of 1. तो यहां हमने लिखा है if n is equal to 1 return value. वैल्यू को हमने 1 सेट कर रखा है. अगर n की वैल्यू 1 है then return 1, else value is equal to n into fact of n minus 1. तो इसमें क्या होगा, आपने फंक्शन फैक्ट के अंदर से ही फैक्ट को कॉल करा तो क्या होगा आपका, जैसे अगर मान लीजिए आप 3 का फैक्टोरियल निकाल रहे हो, 3 का फैक्टोरियल निकालते समय पहले हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल विल कैलकुलेट द विल गो इनटू कैलकुलेशन ऑफ फैक्टोरियल ऑफ 2. 2 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए हम कहेंगे 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1, बट 1 का फैक्टोरियल के लिए ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, n की वैल्यू नाउ बिकम्स 1 एंड 1 के केस में हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, वैल्यू 1. So this will return 1. 1 into 2 into 3 will give 6. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ रिकर्शन में हमेशा आपको एक टर्मिनेटिंग कंडीशन देना जरूरी है. अदरवाइज क्या होगा, अगर आप कोई भी टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं दोगे तो फंक्शन अपने आप को एंडलेसली कॉल करता रहेगा. मीन्स कि 0 के बाद -1 हो जाएगी वैल्यू n की, फिर -2 हो जाएगी, -3 हो जाएगी, एंड देयर विल द function call will become infinite and your program will not terminate. So always a terminating condition needs to be given. तो यहाँ पे हमने क्या कहा है कि factorial of 1 is equal to 1. So we have taken the terminating condition as if n is equal to 1. Means अगर 1 का factorial निकाला जा रहा है then return the value of 1. So जब ये function call होगा for n is equal to 5, जब n is equal to 5 के लिए function call होगा, it will become 5 into factorial of 4. Then factorial of 4 calculate होगा तो it will become 4 into factorial of 3. 3 के factorial के लिए हो जाएगा 3 into factorial of 2. 2 के लिए हो जाएगा 2 into factorial of 1 and 1 का factorial is 1. और ये reverse में सारी values फिर multiply होंगी and the result will be 1 into 2 into 3 into 4 into 5, which will give 120, and factorial of 5 is 120. So this is an example of recursion. Now if we just try out the program on the same basis, try out the program for calculating the power of 2 to the power of n. Just write the program using recursion, or you can generalize this program into a to the power of n, जहां आप a और n की वैल्यू यूजर से इनपुट कराओगे. a is the base and n is the power. Okay, and you have to solve this question using recursion. So you can try out both the questions. एक में आप बेस फिक्स ले लेना 2 एंड सिर्फ आप किसकी वैल्यू इनपुट कराओगे यूजर से, n की. एंड सेकेंड एग्जाम्पल में उसी को आप जनरलाइज कर लेना, because this program will only run for the base 2. So you can say accept the value of a also and n also. So this program will be a more general program. आप कभी भी किसी के भी you can find out the value of 3 to the power of 5 also. You can find out say 7 to the power of 9 also.
because A and N both will be input from the user. So just try out this example of A to the power of N using recursion. Okay. And second problem you have to do is print the Fibonacci series using recursion. Now you have written the program for Fibonacci series without recursion. Just try out this question using recursion. Okay. Now you all know what is a Fibonacci series. Fibonacci series में your say every term is the sum of its previous two terms. तो कई बार हम इसको फर्स्ट टू टर्म्स को या तो 0 1 ले लिया जाता है या 1 लेते हैं. You can take either of them. You can either take the first two terms as 0, so the third term will be 1. Then fourth term will be 1 plus 1 2, 2 plus 1 3, 3 plus 2 5, and so on. And अगर आप 1 1 से शुरू करते हो तो 1 plus 1 is 2, 2 plus 1 is 3, 3 plus 2 is 5, and so on. ठीक है. So just try out this question. Try to print the Fibonacci series, maybe the first 10 terms of the Fibonacci series using recursion. You've done it without recursion, just try it out with recursion. Now, there's one function, exit function. Now, this exit function at times is, जब भी कभी आपको होता है कि प्रोग्राम को बीच में terminate करना है due to any reason, then you can use this exit function. Exit function में exit function may you can pass some value. This value is usually 0 when a function is successful, and it returns a non-zero value when the function say stops with some problem. So यहाँ पे लिखा है an exit code of 0 usually means that the program has finished normally, and any other value means that some error or unexpected results have happened. So at times, if you want to stop a program, a running program immediately, then you can use the exit function. Okay. And this is defined in the stdlib.h header file. So you have to include this particular header file before using this function. Standard library file stdlib.h के अंदर ये exit function declared होता है. So whenever you need to call this function exit, you need to include this header file in your program. So this is all for today's class. In next class, we will be starting with the new topic, that is storage classes. Okay. So just try to write some programs, do some more practice programs on functions, and then we'll learn a new topic, that is storage classes in C++. So there are 4 storage classes in C++. That is automatic, static, external, and register. उनको हम detail में next class में पढ़ेंगे. So I'll end the class here. Just go through the functions. The function topic is over. This is a separate topic, so we'll cover it in a separate class.